Hello, everyone, and welcome to my YouTube channel, The United Road. Welcome to another live stream. Welcome to another day where lot of news, lot of rumors, lot of trying to be positive intent. Trying to show the positive intent in the market. But at this point of time, are we really there yet? That's what I want to ask. Are we really there yet? So we will start once people starts to get in, but at this point of time, first of all, I will be talking about the channel membership. So if you guys are here, if you guys have not taken the membership, make sure that you take it, look at the perks, and also help me out as well, on what things I can definitely try. It's for all the United fans, so your uh, ideas, what you feel that I should be doing more, that matters as well. So help me out with that. Keep your make your voices heard. And as I said, if you have not taken it, make sure you take it and help me out with that. So Lucky bhai, welcome. Mojo Jojo, welcome. Sanjay bhai, welcome. Ronaldo lover, welcome to the stream, everyone. So many things to talk about. Shamko, we have seen some developments regarding Pulisic. Then we have Casemiro, Rabiot deal, Elon Musk tweet, and making basically a mockery of all the United fans. So we have a lot of stuff to talk about today. We will be covering it one by one. We will start with Elon Musk's tweet that he did in the morning, and that sent every United fan into frenzy. You know, just the beginning, and he sent every United fan into frenzy. People thought that, oh, all of a sudden he will make a bid and all that. All that media circus started to happen, but we all know, that it just turned out to be a joke. So I will first of all show, the tweet that Elon Musk did, that made everyone go bonkers. Fabrizio tweeted it as well, but just few minutes later, he was like, it's all a joke. It's all a joke. So all right. So this is Romano's page. Starting with Romano's page, guys, बहुत सारी development हुई है आज. So I am starting with Fabrizio's Romano Twitter. ठीक है, ये देखो भाई. तो पहले ये न्यूज भी है, बट पहले एलॉन मस्क को देख लेते हैं व्हाट ही ट्वीटेड. ठीक है, ये तो इसने रीट्वीट किया था. ही डिडंट फॉलो इट अप, और उस तरीके से और कुछ नहीं था. सो एलॉन मस्क, द ट्वीट दैट मेड एवरीवन गो gaga was, I cannot say it whether it's, yeah, this is the tweet. This is the tweet that made everyone go mad. Ronaldo to rip Glazers off. Sanjay bhai, I don't know. And to be very honest, I don't care about this saga anymore. I will try to be calm when it comes to Ronaldo and it comes to Glazers, but we all know that either, keeping a player who's not willing to stay, is not going to help you. Okay? So either terminate or either hear bid, accept bid, do whatever you have to. But if someone is not willing to stay, just let them go. Okay? Just let them go. See, I am not here to talk about, out of the ordinary facts. No one is going to pay 8 billion. There is no news about Glazers to sell the club at 7.95 billion. No news. So whoever buys the club, whoever not buys the club, whether the club is available for, new ownership, we will see. Time will tell. At this point of time, we are going to talk about the things which is basically happening at this point of time. Okay. So as I said, Elon Musk tweet, and he said that he is not going to buy a sports team and all that. So what was his intention behind doing that? Few 100,000 likes or whatever it was. But with Elon Musk, you know, you never know. Getting back to other topics. So at this point of time, the biggest update that's coming, it's basically regarding Pulisic. You know, is about Pulisic. So United are looking to buy Pulisic.
but they don't want to pay on a permanent basis. They want him at this point of time on only on a loan. Chelsea is not willing to sell the player on a loan. So चलो एलॉन मस्क का ट्वीट हटा दो भाई दो. न्यूज़ दैट प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी. संजय भाई देखो, if they are not happy, whoever is not happy, make that player sit on the bench. Make that player sit on the bench. Whoever is not happy, भाई जिसको नहीं खेलना है वो ना खेले, बात खत्म. Simple सा fact है. Those who are not willing to play for the club, those who have problems with eriktenhag, they should just let go. वो छोड़ दे भाई, वो मत खेले. उनके बस का नहीं है कुछ. Pulisic on loan, yeah. That's the news that's coming in. So let's see. देखो संजय भाई, whether he was testing the waters, whether he was doing something else, time will tell. Okay, time will tell. अभी जो है, अभी no one has any idea what he basically wants, right? किसी के पास कोई आइडिया नहीं है कि what he basically wants. अभी everyone is just, he tweeted and he simply denied it. He simply denied it straight away. बहुत जल्दी उसने deny भी कर दिया. So it's not like he kept it up for a long period of time. He simply denied it straight away. So Elon Musk, what he wants, what he, for him it's like pennies. उसके लिए 4 billion, 5 billion मजाक है. Yeah, Ronaldo, yeah, anything can happen in football, but at this point of time, it's looking very unlikely that we get, purchased by someone like Elon Musk. That's what I'm saying. At this point of time, it's a bit difficult, but in football, anything can happen. Anything can happen. Venkatesh bhai, welcome to the stream. Thanks a lot for joining in. Venkatesh bhai, वो form भर देना यार. वो description में, guys, the membership form is in the description. Whoever has taken the membership and they have not filled up the form, please do that. Please fill up the form so that I can send you the articles. I have already started sending it, so make sure that you guys do it. देखो, we are getting linked with Casemiro and we are getting with Pulisic. So these are the two people, we are going to talk about in detail. दानिश भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. अरे करण भाई देखो, मजाक होता है ना. कोई ऐसे ही आके पर्सन विथ ऑलमोस्ट 100 मिलियन फॉलोअर्स, कोई ऐसे ही आके मजाक नहीं कर देता. तो उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा. नो वन कैन से, नो वन कैन टॉक अबाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बिल्कुल, मैं उस टाइम पे भी, मैंने सुबह भी यही ट्वीट किया था कि जब तक भाई वो ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर एज अ ओनर खड़ा नहीं होता ना, तब तक बिलीव मत करना. तब तक बिलीव मत करना. कुनिया का कुछ नहीं है भाई अभी. The deal for Cunha at this point of time is going nowhere. I don't think Cunha is interested in coming. Cunha is not interested in coming. Whenever this, Danish bhai, that's great movie. So मैं वही बोल रहा हूँ भाई. देखो, as Sanjay bhai said, he made that joke about Twitter as well, and he eventually purchased Twitter. So we will have to just wait and see how things go. We will have to just wait and see how things go. अभी फालतू के होप्स हाई करने से कुछ नहीं है. Whether he comes, whether he is not coming as a owner, that's totally different. ठीक है, उसने बोल दिया भाई इसको नहीं खरीदना. We have bigger fish to fry at this point of time. We have bigger fish to fry at this point of time. So let's see. We can talk about this and that ownership, but yeah. Hello Zita, welcome to the stream. So at this point of time, we have to keep in mind that we are a big mess. No one wants to have such a big mess. ठीक है, वो पैसे भी दे भाई, उसको लोन का भी देखना पड़ेगा. बहुत सारी चीजें हैं. So Pulisic पे आता है. First of all, let's talk about Pulisic. I have put up a poll, और eventually मैं सबसे ये भी पूछूंगा कि personal point of view regarding. First of all, let's talk about Casemiro. ठीक है, क्योंकि Casemiro से we are getting linked earlier than Pulisic. So first of all, Casemiro, 30 years old. United is willing to pay 50 million for Casemiro. Okay, 50 million for Casemiro, 30 years old. For me, this guy can still give us like 3 to 4 years. Casemiro, even at 50 million, he can definitely give us like 3 to 4 years.
So what do you think, guys? Should we go for Casemiro? I've been joined by 10 people at this point of time. Should we go for Casemiro? Should we go for Casemiro at 50 million? 50 million. There are certain reports that we might pay 80 million. That makes no sense. Databhai says if Casemiro comes, I have no problem. Karan bhai says 50 million ज़्यादा नहीं है. Sanjay bhai says our club is in half billion debt. Exactly. Guys, thoughts on Casemiro? Honest thoughts. For me, 50 million for a player who is 30 in his prime, he can easily give us like 3 to 4 years. Casemiro के साथ ज़्यादा injury problems भी नहीं है. When you look at Casemiro, it's not like he is very injury prone as well. So we are getting talked about, and now reputed journalists, they are saying that he is willing to listen to the offers. I don't think this deal will happen. So, but yeah, we will definitely talk about it. You never know. We cannot say never, Databhai. But yeah, very, very unlikely transfer. Yeah, this was the point that I wanted to make as well. Danish bhai, welcome to the stream. They have to many, but totally depends on Ancelotti. Ancelotti rates Casemiro really highly. So वो देखना पड़ेगा. Hello Amit bhai, welcome to the stream. Should I forget about Frenkie de Jong? भाई अभी मैं तो भूल चुका हूँ, to be very honest. I have been very cocky about the Frenkie de Jong deal, and this is gonna hurt me very badly. That's how it is at this point of time. If he comes, I will be static. Static like, but at this point of time, मुझे नहीं लगता कि होगा. So let's see. I don't give a shit about what he thinks, to be honest, Datta bhai. Casemiro का इंजरी रिकॉर्ड उठा के देख लो. Casemiro का इंजरी रिकॉर्ड उठा के देख लो, and how many games he has missed. So, and the games that he missed, उसमें रियल मैड्रिड का क्या हाल हुआ है वो देख लो. Let's dream together. नहीं है भाई, इसमें ये फालतू वाली बातें हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सेस्को भाई, सेस्को का कोई चांस ही नहीं था. इफ पीपल गॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सेस्को, तो भाई वो उनकी गलती है. सेस्को वाज नेवर गोना कम. भाई दोनों का ओनर एक है. उसने एक अपने क्लब से उठा के अपने दूसरे क्लब में ट्रांसफर कर दिया प्लेयर. दैट्स इट. De Jong obviously is a very big disappointment. Nunez, I am absolutely not disappointed at all. भाई 100 मिलियन का कोई सेंस ही नहीं था उसके ऊपर. ठीक है, अगर हम 100 मिलियन में ले लेते ना, तो यही जो फैंस है जो भी न्यूनियस कर रहे हैं, वो न्यूनियस की बजा रहे होते आफ्टर द परफॉर्मेंस दैट ही डिड अगेंस्ट. सो रौनक भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. ही इज अ ग्रेट प्लेयर, व्हाई वुड ही कम टू अस? देखो, न्यू चैलेंज, कल वाली बात, कल लोगों ने बोला न्यू चैलेंज फॉर कैसेमीरो, ही माइट ट्राई टू कम एंड बट फॉर मी आई थॉट इट वाज मैडनेस. बट टुडे थोड़े से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. ही इज विलिंग टू लिसन टू अस व्हाट वी हैव टू ऑफर. And they now have Kamavinga, Tukemeni, Valverde. So they have the replacements ready. Everything is ready for Real Madrid. So he might just take a new challenge. You never know. But let's see. Sandeep bhai, welcome to the stream. Jio Dandanadan. दादा भाई, इतना दिमाग अगर हमारे अंदर होता, if we were this efficient, if we were this efficient, तो भाई हम कहाँ से कहाँ होते as a club. As a club we would have progressed so much if we had this much ambition and this much brain behind every transaction, every deal that we do. Someone like Limer and Ruiz is basically like no-brainer deals, and that would have costed us like what, 45-50 million. दो प्लेयर के 50 मिलियन में हो जाते हैं. 50 मैक्स टू मैक्स 60 लगा लो यार, टॉप एंड. Two quality players, Scamacca, Nunez. Time will tell, Datta bhai. But I think Scamacca is going to be a great buy for West Ham. Danish bhai, no. देखो, पता है क्या? Long term में that's gonna hammer our deals. अभी अगर हम कैसेमीरो की 80 दे देना, तो डियोंग के भाई 150 मांग लेगी बार्सिलोना. Because we paid 80 million for someone like Casemiro, who is 30 now. So unfortunately, can totally relate to it, bhai. Totally relate to it. Casemiro dream is of many. भाई आ सकता है, but player will have to push. उधर से पहले प्लेयर को पुश करना पड़ेगा.
या Tukemini needs game time. भाई देखो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद कैसेमीरो। भाई कैसेमीरो की जो क्वालिटी है ना भाई, वो अभी वर्ल्ड में बहुत कम बंदों के पास है। इवन एट द एज ऑफ 30 व्हाट दैट गाय कैन डू इन द मिडफील्ड, वो बहुत कम बंदे कर सकते हैं। भाई देखो, डिक्लाइन दोनों का हुआ, रैमोस का भी, वरान का भी, यू नो, और दोनों को ऑलमोस्ट एक टाइम पे हुआ और मैड्रिड ने दोनों को रिप्लेस किया है। सो लेट्स सी, एंड सो फार दे आर डूइंग गुड, सो फार दे आर डूइंग ब्रिलियंटली, नॉट इवन गुड, ब्रिलियंटली आई वुड से। तो देखते हैं हाउ थिंग्स गो, बट Casemiro for 50 million, is a no-brainer for me. Not more than that. I still feel that this guy can give you at least 3 to 4 years. You know, 3 years, if not four, at least 3 years. Not gonna happen. Not gonna happen. McFred, Maguire. So if you really think we are not able to sell players from 5 years, you really think we are going to sell 4 players in one window? And who are we going to replace them with? Who are we going to replace them with? 4 players, you say. How much money are we going to, replace those 4 players with? भाई Rabiot deal is dead. Rabiot deal is dead, guys. मैंने सबसे पहले वही बात करना था, बट हम आ गए भाई Casemiro deal पे. Rabiot deal is absolutely dead at this point of time, guys. And which is a great news. Which is a great news. मैं वही बोल रहा हूँ, 3 for 3 years makes sense. For 3 years makes sense. उससे ज्यादा नहीं है भाई. He is not going anywhere. He is not going to Chelsea. He is not going to Chelsea at this point of time. He just want to stay over there. बच के Rabiot से बिल्कुल 100% भाई. He is twice the player that McTominay and Fred are. He is twice the player that McTominay and Fred are at this point of time. देखो भाई, दोनों को जाने दो, दोनों को जाने दो. Honestly speaking, दोनों को जाने दो. But replace करना पड़ेगा. Malacia we already have. Get Alvaro Fernandez in the mix. 2 young, hungry left backs to put each other, for the best. भाई देखो, डेस्ट आई डोंट रेट वेरी हाईली. भाई पुलिसिच को वर्ल्ड कप खेलना है, करण भाई, पुलिसिच को वर्ल्ड कप खेलना है, एंड यहाँ पे उसको डेफिनेटली ज्यादा गेम टाइम मिलेगा फ्रॉम चेल्सी. यहाँ पे उसको डेफिनेटली ज्यादा गेम टाइम मिलेगा फ्रॉम चेल्सी. If we go out and dish out new long-term contracts to Shaw and Fred, no idea. Absolutely. Kasam se. Need signings. No signings is going to get, no signing is going to happen before Liverpool game. भाई ये हम last moment तक खींचेंगे. We are going to, put this till the end. So let's see. The most happiest person in the world at this point of time is Celia. Thanks a lot, Celia, for the super chat. She is basically celebrating, the cancellation of Rabiot deal. She is basically celebrating the cancellation of Rabiot deal, and makes all the sense at this point of time. मैं 1 सेकंड रुक जाओ, मैं बस 1 मिनट में आया. यहीं पे हूँ, बस थोड़ा लिंक शेयर कर रहा हूँ. चलो. I like the Pulisic. I like Pulisic deal as well, to be honest, Gaurav bhai. I like the Pulisic deal as well. If it's on loan, I won't mind it. If it's on loan, I won't mind it. Garner should be loan. भाई Garner को रखते खिलाओ. लोन कितना करोगे? बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ. It's going to be a very very tough going for.
पुलिसिच अच्छा गप्को। भाई पुलिसिच उस तरीके से खेला भी नहीं है, चेंज ऑफ मैनेजर, चेंज ऑफ सिस्टम। पुलिसिच की प्रॉब्लम्स भी अलग है भाई। वी आर टॉकिंग अबाउट अ लोन डील, पैसे खर्चने होते तो भाई हम कब का कर चुके होते ध्रुव भाई, दैट्स द थिंग। टोटली फॉल्स। मुनियर इज नॉट गोइंग एनीवेयर। म्यूनियर इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सो रोनाल्डो पुलिसिच लोन स्वैप, भाई पता नहीं क्या ही करेंगे भाई। पीपल टॉक अबाउट गप्को, चलो ठीक है भाई, गप्को, बट गप्को के लिए भाई यू विल हैव टू पे 90, यू हैव सॉरी यू विल हैव टू पे 40 मिलियन। पुलिसिच है, पुलिसिच का भाई देखो दो तीन प्रॉब्लम्स है पुलिसिच के साथ। नेवर गॉट अ रन ऑफ गेम्स, इंजरी प्रॉब्लम, वी ऑल नो। बट एज आई सेड, यहाँ पे हम पैसे खर्चने की बात नहीं कर रहे हैं। पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग मनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हम लोन पे लेने की बात करना है। गप्को के लिए 40 देने पड़ेंगे। गप्को मेरे लिए तो भाई नहीं आता, गप्को तो मेरे लिए नहीं आता, बट लेट्स सी। एग्जैक्टली। Glad it never happened. Glad we didn't replace Pogba with a unskilled Pogba and bigger issues. Bigger issues. Happy birthday, bhai. Happy birthday. Thanks a lot for joining in. भाई सब happy birthday wish कर दो भाई को. GH is much more deal for not for me. Not for me. GH को देख लिया भाई. At least Pulisic can take the physicality of Premier League. Cannot say that for GH. Absolutely, Sanjay bhai. I don't think that's, I think it's a no-brainer. It's I don't think it makes, any sense to delay the deal. मतलब अगर 50 मिलियन में मिल रहा है तो भाई it's like a gold mine. It's like a gold mine. If we are getting someone like him for 50 million, ले लो. बता भाई, we could have gone for so many players. बात तो यही है ना, we could have gone for so many players, but we didn't. We didn't. And Rangnick was right in every way. That's why he's not with the club. Rangnick was right in a lot of ways. That's why he is not with the club. See, I won't say an upgrade because fitness का issue है पुलिसिच के साथ. So we will have to see how fit he is. How fit he is to play the entire season. But let's see. Casemiro for 50 million, it's a no-brainer. For me, it's a no-brainer. That guy can easily give you 3 years. Easily give you 3 years. So my Frenkie at this point of time is looking unlikely. But ये नहीं आने वाला. Milinkovic Savić is not gonna come. If he would have been there, lot of things could have happened. Lot of things could have happened. भाई वही तो मैं वही बोल रहा था. That's why I was so excited. भाई देखो, I would definitely go for Frenkie de Jong at 85. Simple है. ठीक है, 25 is gonna give us lot more years than someone like Casemiro. So वरुण भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. ये वरुण भाई, आपके साइड में ये मेंबर वाला बैच क्यों नहीं लग रहा अभी? ये गलती की सजा जो है ना, क्या बोलूं मैं. FPG or Casemiro. FK Ultra, welcome to the stream. I would go with Frenkie de Jong, to be very honest, because to be honestly speaking, we need both of them, and that would be like immense. But then for me, Frenkie de Jong, it's someone we need more because there is no one in the midfield who can basically even get the ball to the midfield, into the wingers, or get a ball to the striker. So अरे कोई दिक्कत नहीं अरुण भाई, बट मैं अब छोड़ने नहीं वाला इस पर. फ्रेंकी एंड कैसेमिरो आर सिमिलर प्लेयर्स. We need both these kind of players. अरुण भैया, ये नेपाल में चलता ही नहीं, अब कैसे करूं?
It's not working in Nepal. मुझे पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है why. It's not working in Nepal. That's the problem. I think no one knows. I don't think anyone got the answer. Guys, this is a question that is asked a lot. सब अपने अपने थ्योरी बताओ यार. This is a very good question. मैं इस पे 5-10 मिनट तक डिस्कशन करूंगा. I just want everyone to chip in. And whoever is here for the first time, if you want, take the subscription, take the membership, look at the perks, and even tell me if you need something else in that. So, let me know. And I have targeted 50 membership. So far, we are at 22. Yeah. Yesterday, we were at 17. But because of Venkatesh Bhai, a lot of people, he gifted like 5 memberships. So, guys, this is the question I want to talk about first. This is the question. Why are we chasing Frenkie de Jong for 3 months? I want an answer from Murtough. अपने अपने ideas बताओ. Why are we chasing Frenkie de Jong for 3 months? If everyone is saying, right, that he wants to stay at Barcelona, why would a club who knows that a player wants to stay over there would chase a player for 3 months? सबके ideas सुनने हैं मेरे को. I just want to hear your ideas, guys. And as I said, if you are here for the first time, like, share, subscribe, and take the membership if you want. So, all right. So ETH needs a register like him. Okay. Karan Bhai says क्योंकि ETH को चाहिए था. He definitely wanted to join us as sports angle. अरे चार धाम. Arun Bhaiya, thank, only God can tell us now, as Murtough will only say something post the window ending. Sorry, okay. See, even people are saying that okay, Barcelona duped us, okay, or Frenkie de Jong duped us. भाई 3 महीने में I am not going to believe कि भाई our United hierarchy is so dumb. है dumb भाई, है बिल्कुल clueless हैं at times. But I won't believe कि भाई इनको कोई idea नहीं था regarding what they are trying to achieve with this deal for 3 months. I cannot believe that. You chase a player for 3 months. If they don't have anything to say, how can you keep on chasing? Nice one, Arun Bhaiya. United Talk, Muzafir Bhai, welcome to the stream, guys. AG Records and United Talk, both are huge United fans. Give their channel a subscribe as well. So make sure you're doing it. By every other, exactly. By Schneider का तो क्या ही बोलूं. ETH wants him really bad. I can definitely, feel that way. A lot of people are saying, guys, we are discussing on this question. Okay, Himit bhai question was there. मैं सबके ideas ले रहा हूँ. Whoever wants to, get in and share their ideas. भाई 3 महीने से we are chasing a player. For what? क्यों कर रहे हैं हम chase? Kaushik bhai, welcome. Basvi Waves, welcome. Okay, so Basvi Wave says he might have solved many problems. Okay. This is a very, very good point by Somdi Bhaiya. Welcome to the stream, Somdi Bhaiya. Issue is not with Murtough. Issue is previously get some enticed, but now nobody wants to play without money. I think this is a really, really good point that, everyone should keep in mind. Previously, we used to just go out and throw money with Matt Judge. He never tried to understand make the players understand why he wanted them. All he wanted to do was, we are paying you this much. Are you going to sign? No links in that, Potato Boy. Absolutely no links that says we are willing to sell him for 10 million. Absolute BS. Absolute BS. Sommer is good. Sommer is really good. We will talk about it, Venkatesh bhai. We will talk about Sommer as well. Jan Sommer. We will talk about him. But अभी थोड़ा eriktenhag और we are talking about एक दो और बंदों पे अभी. उसके बाद we will get to Jan Sommer. ETH मुझे लगता है ETH को हाँ बोला होगा.
एग्जैक्टली हो सकता है, हो सकता है. Maybe, this is a good point as well, guys. That we might just try to get linked with Casemiro to put pressure on Barcelona to sell Frenkie de Jong. This is a good point as well. Ronaldo lover says all are saying Casemiro and Pulisic tomorrow. News is coming, deal is off. Let's see, let's see. That's what happens in a transfer window. For me as well, I rate Sommer very very highly. I have seen him play for years now. Like at Gladbach, he is one of the best. He's one of the best. I'm not going to say the best. He had a bad season. He had a bad season, but ETG openly said Frenkie de Jong or no one else. Okay, Bradova, thanks a lot for sharing all the news. Marcelo is calling it quits. Let's see. Marco Asensio, I won't mind Asensio at all, guys. Give me your views on Asensio as well. I don't think anyone would say Asensio for like 25 million. So where United will finish? This question I can answer you well, Kaushik Bhaiya, after basically the transfer window ends. Chalo. Good move for Ndombele. I think he was never utilized properly by Tottenham. असेंसियो की इंजरी का इशू रहा है भाई, बट आई वोंट माइंड असेंसियो फॉर 20 मिलियन टू बी ऑनेस्ट, 20-25 मिलियन. I won't be surprised. I won't be surprised. Somebody will say if we are 100 million exactly. That's a huge possibility, guys. That's a huge possibility. Buying someone like Brathwaite on the deadline day. That's a huge possibility. I cannot tell the position at this point of time, Ronaldo lover. I am still waiting to see where the window finishes. I can say it after 2 weeks. Once the transfer window gets over, then I can come out and say where we will finish. And Newcastle, promised a lot, and all of a sudden they are going for mediocre players. All of a sudden they are going for the mediocre players. भाई we are looking for number 2 और अगले सीजन हेंडरसन आ जाएगा ध्रुव भाई. अगले सीजन हेंडरसन आ जाएगा. मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इकार्डी नहीं भाई, यूनाइटेड ने नहीं किया. Obviously he will get millions of messages. This is a good deal for Brighton. The way they set up, Stupian is a really really good deal for Brighton. Arnbaya says player with 2 legs, 2 hands, head, eyes, nose, ears, and 206 functioning bones with heart, kidney, lungs, and at this point of time, no one. Arnbaya, at this point of time, no one. I don't care, Somdi Bhaiya, to be very honest. At this point of time, I have stopped, being bothered about the number of goals we are going to concede. I just need to see fresh faces in the team and the players who are at least willing to play. Who are willing to put their body on the line. I don't want to see the faces of Maguire, even drop Rashford for the next game. Simple. Even drop him. चलो भाई, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाउ गुड है. चलो, ये अपने आप को भाई सोच रहा था कि ही इज द नेक्स्ट, पता नहीं क्या ही है. Herrera. Thank God we dodged a bullet by not giving him a new contract. One of the best decisions that we made, by letting him go. Injury problems and all that, and wanted a deal like what, he's Ronaldo or something. मैं देखो डेली अली का हो गया है,
that player is done. That player is done. देखो डिफेंडिंग में दोनों ही घटिया है, एक एटलीस्ट क्रॉस कर सकता है जो कि आर्नल्ड है। भाई मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। चलो इस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं संजय भाई से। पीपल सेड पॉग्बा वाज द लीग, पीपल सेड लिंगार्ड वाज द लीग, आई एग्री। पीपल सेड डीनो वाज द लीग, आई डिडंट एग्री। Now Henderson is gone. Now who's leaking? Arsenal for sure, Sandeep bhaiya. Arsenal for sure. Jesus, वियेरा जरूरत नहीं था उनको, बट लिया उन्होंने, चलो ठीक है देखते हैं। एंड जिनचेंको, और भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट ने तो पूरी टीम ही बदल दी अपनी। सो बिल्कुल भाई देखो, न्यूनियस के लिए 100 मिलियन का कोई सेंस नहीं बनता था। देयर वाज नो सेंस इन पेइंग समवन लाइक न्यूनियस 100 मिलियन। एंड गाइस, एज आई सेड, जो यहाँ पे रेगुलर है, if you want to take the membership, you can take it. At least check the perks, and if you want to take it, just do it. Okay, so this is the target that I am thinking of for the next month. So we have reached 22. So with your support, I can definitely reach 50, but fingers crossed. So as I said, 50 तो भाई 50 लोगों से तो 50 लोग तो ऐसे हैं जिनसे I am talking on daily basis. So hoping that they take it. Baki, it's totally on you guys. No one gives a shit. I am not going to take just any comment, to be very honest. No one wants to take another player who cannot defend. Yes, Nunez is suspended 3 games. While Liverpool match is like make it or break it. Not for me, to be very honest. For me, these 3 games, पहले गेम में ही हमने बिल्कुल दिखा दिया कि भाई we are not up for the season. I'm still waiting to see what we do in the next 2 weeks. But yeah, इस सीजन में वैसे भी उम्मीद ज्यादा कुछ नहीं था, विथ लिवरपूल ड्रॉपिंग पॉइंट्स, चेल्सी ने ड्रॉप किया अगेंस्ट स्पर्स। सो रहेगा, ये थोड़ा टाइट रहेगा, एंड वी हैव टू आल्सो कीप इन माइंड दैट दिस इज द वर्ल्ड कप ईयर, गाइस, दिस इज द वर्ल्ड कप ईयर, सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। भाई ये पेंट ही कर सकते हैं बस। एंड विच इज अ स्मोक स्क्रीन फॉर मैक्टोमिने एंड फ्रेड स्टार्टिंग अगेन अगेंस्ट लिवरपूल। Bhai, he is getting a lot of stick. He is getting a lot of stick. He is getting stick everywhere. It's not just here or by few. We have talked about Bruno and how he needs to be dropped. He's just not showing up. Nowhere to be seen. Missing chances after chances. नेपाल वाला आज अरुण भैया, नेपाल वाले आज बंदे थोड़े कम है, तो लिसांड्रो सीडीएम आई वोंट माइंड, बट या देयर इज नो न्यूनियस, तो इसको सीबी ही खिलाओ, इसको बुली करने वाला, अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर्स रेगुलर वे में उसको नहीं कर पाएगा कोई बुली। सो लेट्स सी, यू नीड टू बेंच ब्रूनो एटलीस्ट फॉर 2 मैचेस। बिल्कुल, अगला मैच अगर नहीं भी कर रहे हो तो भाई उसको 2-3 मैचेस के बाद कर दो, बट करो। We need to get him, on the bench, and just to get his mind right, just to clear his head. मैं देखो, ये सारी जो है ना, ये सारी बस बनाने वाली बातें हैं, सब बनाने वाली बातें हैं, ठीक है। ये उसको आने वक्त ही, इफ एज आई सेड, इफ ही इज नॉट हैप्पी, ही कैन लीव एनी टाइम, एनी टाइम। सो भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना कि चलो ठीक है, क्यों उस तरीके की मार्किंग है वो no one would know. So let's see, guys, we are very very close to reaching 50, so make sure that we are, you are liking the stream. I won't be surprised. It will be like damage limitation with Fred and McTominay again. And in terms of limitation of
damages, we will end up considering like 4-5. So not even surprised. Not even surprised. मैं देखो वुल्स वुल्स का तो भाई अलग ही पोर्चुगल कोटा चलता है, उनका तो हटा ही दो। मैं देखो एरिक टेन हाग इज इन, यू नो, सी द फैंस वांट एरिक टेन हाग to show that he can take the hard decisions, you know. That's why Ole was mocked, Ole was abused. So what about goal of the month? भाई मार दे, कोई भी मार दे चलेगा. For at this point of time it's definitely one guy, and that's, you know, the goal that he scored in the last game, and that's his name is Diaz. So Diaz was absolutely sensational. भाई वही है ना, तुम कितनों को रोकोगे, सारे वैसे ही हैं भाई। नाम लेना बहुत इजी है, जिसको पसंद नहीं करते ना लोग, उसका नाम ले लो बस। भाई देखो सीजन हार्ड होगा, सीजन हार्ड होगा। व्हाट आई वांट टू से इज मेक द हार्ड डिसीजंस, लेट द सीजन बी एब्सोल्यूट मेस, मेक द हार्ड डिसीजंस, you know, try likes of Malacia, try likes of Donny, try likes of Gardner, make them play, make them play. If I am the United manager, I am definitely making a lot of changes for the Liverpool game. If I am United manager, I am absolutely going, you know, totally gonna change the team. Whether people like it or not, whether people like it or not, I don't care. But I am gonna change the team. Simple. If I am the United manager, what I am going to do for the Liverpool game, okay? So for Liverpool game, Heaton comes in. You know, I am not saying that he is better than De Gea, but I just want to make a statement that, you know what, if you are not performing well, you are going out. Maguire goes out, Rashford goes out, Bruno goes out. You know, I want player who will be hungry. You know, अच्छा हाँ बिल्कुल वही भाई, मार देंगे अभी गेम्स है अदरवाइज। भाई selling players is impossible because they are on high wages, injury prone, they are not willing to take a wage cut. So that's why it's very hard. You know, that's why it's very hard. Because at this point of time, no one wants them, and the fact is, they don't want to leave either. You know, they want to leave. They don't want to leave. Sorry, leave. Sorry, they don't want to leave either. That's the thing. That's what's happening at this point of time. Simple as that. Simple as that. That's the thing that's happening at this point of time. People talk about why it's impossible. मैंने 4 रीजन बता दिए भाई. They are not willing to take a wage cut. इतने हाई वेजेस पे हैं कि भाई नॉट मेनी टीम्स कैन अफोर्ड इट. अच्छी टीमें लेंगी नहीं, बुरी टीमों के पास पैसा नहीं है. डिफिकल्ट क्वेश्चन दानिश भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन. ग्लेजर्स एब्सोल्युटली लव फिल जोन्स. मुझे तो लग रहा है भाई 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और दे देंगे उसको. Obviously, you know, people talk about sell Maguire, sell Shaw, sell Fred, sell McTominay. एक विंडो में कर दोगे तो भाई खिलाओगे किसको? बॉडी नंबर काउंट भी तो होना चाहिए ना. यू नो, बॉडी काउंट भी होना चाहिए. वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर बॉडी काउंट नहीं है तो भाई खिलाओगे किसको? यू नो, आई हैव सेड दैट बिफोर एंड आई विल से इट अगेन कि बोलना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी इजी. यू नो, बोलना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई सबको निकाल दो. भाई सबको निकाल दोगे तो फिर खेलेगा कौन? Who is going to play if you are taking out everyone? कोई बचेगा नहीं खेलने वाला. So that's to be kept in mind as well. You know, that's to be kept in mind as well. Guys, we have talked about. चलो एक और पोल कर लेता हूं मैं. दिस इज अ पोल, ठीक है. पुलिसिच और जीएच दोनों अवेलेबल है. यू नो, किसको क्या चाहिए भाई बताओ.
पुलिसिच और जीएच दोनों अवेलेबल है. मैंने पोल डाला है भाई. Who wants him? Who wants them? So बताओ. When we will be sold to a sensible football minded owner? This is the biggest question, Shriraj bhai, and I don't think anyone has the answer. I don't think anyone has the answer. This is the biggest question, और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी कोई आइडिया है. Obviously, that's how it should be. We want to win every game, but ऐसा नहीं है कि भाई एक गेम जीत गया and all of a sudden everything will not matter. कि भाई all of a sudden our team is full of world beaters. That should not be the case. भाई वही है, हमारे पास केपेबल लोग भी नहीं है ना. हम तो जाते हैं या तो बिल्कुल टॉप एंड या तो बिल्कुल लो एंड. देयर इज नो इन बिटवीन. सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि देयर इज नो इन बिटवीन. वी आइदर गो फॉर द टॉप क्लास टैलेंट और वी एब्सोल्युटली हैव नो बैकअप फॉर दैट टैलेंट. Okay. Pulisic is coming on a loan option. Loan option definitely. उसको बाय करने का हमारा कोई प्लान नहीं है अभी. But Chelsea wants to sell him. Chelsea wants to sell him. We want to get him on a loan. Okay. We want to get him on a loan. Chelsea want to buy him. So, hey Shay, welcome to the stream. Ronaldo lover says GH because he worked with Ten Hag before and eriktenhag known. All right, that makes sense. That makes sense. So at this point of time, we already have 15. It's like Pulisic. Pulisic is like out and out winner at this point of time. I will watch it. Godabhai, I will watch it. I'm looking at the votes at this point of time, and looks like Pulisic is winning. So I will watch it definitely for sure, Godabhai. Always willing to look at all the good content. मैं देखो बात वही है ना, चेल्सी का एक ब्लूप्रिंट है. Chelsea now has a blueprint. They will, the fans, they will compare everything that the new owner does with what Abramovich used to do. So they are going to spend money, they are going to sign players, and I won't be surprised if they are going to keep on with the tradition where if the manager is not starting or finishing well, he might be sacked. So I won't be surprised in that way either. So let's see. At this point of time, it might not look, but even now at this point of time, they have what, like already 6 players. Thanks a lot, bhai. Thanks a lot. So at this point of time, as I said, they already have signed 6 players. They have already spent what, around 40 million on Koulibaly, 45 million on Sterling, almost 60 million on Chiesa. Oh, sorry, not Chiesa. Cucurella. My bad. So much money already invested. They have also signing talent for the future. So definitely, Prataba, definitely. भाई देखते हैं. Lot of contrasting news is coming at this point of time. And as I said, I am not a firm believer of, things till the time Ornstein or Romano is talking about it. मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई कि whoever the owner is, regardless of whoever the owner is, they will have to invest. But as for Chelsea owners, they have a blueprint they have to follow.
because that's what Abramovich did for this club. In our striker department, Aishwarya, welcome to the stream. I'm not going for Morata at all. Don't rate him at all. Expectations on Casemiro, for me, it's like a distant dream. It might happen. We have seen Real Madrid selling players unexpectedly, but very, very, difficult for me to digest that they will sell Casemiro. Sajal bhai, welcome to the stream, guys. As I said, whoever is here and been a regular out here, so you guys can take the membership. Whoever is joining even for the first time, like, share, and subscribe, and hopefully you guys, will be interested in membership as well. Shan bhai, welcome to the stream. So, and guys, we are just 3 likes away from 50. So keep liking, keep sharing, subscribing, and sharing so that others can join in as well. I don't want Casemiro. भाई कौन दे रहा है? Who is going to give us Bellingham or Rice? मुझे ये बता दो शिरन भाई. Who is going to give us Bellingham or Rice? Bellingham would definitely take a switch, in my opinion, to Liverpool. Liverpool are the firm favorites for Bellingham. So let's see. Pogba was a good player. Okay, not for us. Not for us. Maybe a good player overall, but not for us. भाई यही चीज करनी पड़ेगी अब. और क्या कर सकते हैं? What else can we do? 5 points. Why Glazers should leave? Dividends that they take out. No investment from their own pocket. Appointing the wrong people at the wrong places. ये 3 पॉइंट तो हैं. And I think these 3 points cover everything. स्टेडियम में इन्वेस्टमेंट में फिर सब कुछ ही आ जाता है, स्टेडियम एंड एवरीथिंग. When you talk about choosing the right people, उसमें बहुत सारे एरियाज कवर हो जाते हैं. So 5 points नहीं, but 3 points that covers everything. That covers everything. They can cut out that. They can sell, but for me, I don't think they will sell. Yeah, Casemiro is 30. Casemiro is 30. So what? He was the most important player for Real Madrid. They won the Champions League. Just look at the way Real Madrid plays when there was no Casemiro. बिना Casemiro को Real Madrid का गेम देख लो, and with Casemiro Real Madrid का गेम देख लो. जमीन आसमान का फर्क है गाइस. जमीन आसमान का फर्क है. भाई he is not going. वो उसको साइन करवा लेंगे नया कॉन्ट्रैक्ट, और अदरवाइज he will join somewhere else. हम नहीं देने भाई 100 मिलियन का कोई सेंस भी नहीं बनता. Yeah, exactly. They have already spent 160. Bhai, more than that, I think. More than that. They are saying that they are willing to spend almost 300 million. So, bhai, 4 billion. 4 billion. 4 billion. निपुण भाई. भाई मैं नेगेटिव नहीं हूँ और साथ पॉजिटिव. मैं वही बोल रहा हूँ. इट कैन हैपन, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स वेरी वेरी अनलाइकली. मुझे अनलाइकली लग रहा है. Casemiro is willing to listen to our offers. So let's see. कौन सा एडवांस स्टॉक भाई? विच एडवांस स्टॉक? यहाँ बात शुरू नहीं हुई भाई, पता नहीं एडवांस स्टॉक कहां से हो गया. Who has reported advance stocks? आयुष भाई, who has reported advance stock? एक रिप्यूटेड बंदा बता दो, एक जिसको सारे बिलीव करते हो. ऑनस्टाइन ने बोला है क्या कि एडवांस हो गया है? रोमानो ने बोला है क्या कि एडवांस हो गया है? अब एनडीटीवी ने एडवांस बोला होगा तो भाई एनडीटीवी का तो सबको पता है. कुछ भी रिपोर्टिंग चल रही है गौरव भाई, कुछ भी रिपोर्टिंग चल रही है. जिसको जो मन में आ रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एवरीवन जिसको जो मन कर रहा है, वॉट एवर दे वांट टू टॉक अबाउट, they are just putting it in their reports. That's what's happening at this point of time. That's what's happening at this point of time.
नहीं भाई, बिल्कुल नहीं आयुष भाई। देन भाई सर्जीनियो डेस्ट से बढ़िया तो भाई मैं बैन बिसाका खिला लूं। मैं सर्जीनियो डेस्ट से बढ़िया तो भाई ईथन लेयर्ड ले आओ अपना आयुष भाई। 30 का है भाई, 31 का क्यों बना दिया उसको, इस 30। 3 साल देगा वो भाई, 3 साल देगा वो, और 3 साल मैटिच भाई। व्हेन मैटिच प्लेड फॉर द फर्स्ट 2 सीजन्स, हमारा हमारा स्क्वाड देख लो किस तरीके से खेला है व्हेन मैटिच वाज प्लेइंग इन द फर्स्ट 2 सीजन्स। और कैसेमीरो की जो अभी शेप है वो मैटिच से बेटर है। एंड बात रही लर्निंग की, तो भाई when you really expect United to learn? Do you really expect United to learn? I don't think so, Sajal bhai. I don't think so. But you never know. In football, you never know. भाई 80 मिलियन नहीं दे रहा भाई कटाबड़ा। वी आर नॉट गोइंग टू पे 80 मिलियन। 80 मिलियन का तो कोई सेंस ना तो कोई सेंस है, ना तो कोई लॉजिक है। रिचर्ड आर्नल्ड समझदार बंदा है। मैं वही बोल रहा हूँ भाई। पीपल रियली थॉट दैट टॉकिंग टू 5 फैंस, you know, in a bar, and people thought, oh my god, Richard Arnold, he's so great. He talked with the fans. He talked about we have money. Oh भाई साहब, पता नहीं कब सुधरेगा ये फैन बेस। you know when are we going to learn? Chris Smalling is better than Harry Maguire for many, definitely. भाई वही है ना, I won't mind Casemiro. That's the thing. I would rather play someone like Ethan Laird next season. Adams मेरे लिए good option नहीं है। He was good 2-3 years back when he initially made the strides. After that he has just plummeted. वही लिवरपूल गेम में तो भाई कोई नहीं आने वाला था। लिवरपूल गेम में तो वैसे भी कोई नहीं आने वाला था। तो my computer is virus free, don't worry. देखो भाई लिवरपूल गेम के पहले I see the moment we lost against Brentford, I told you guys that we will linked with like a lot of players all of a sudden। भाई ये भी है वो भी है। We got linked to Cunha, we got linked to Morata, we got linked now with Casemiro। all of a sudden हुआ कि भाई फ्रेंकी डियोंग भी हम अनाउंस कर देंगे लिवरपूल गेम से पहले। एंड आई ऑलवेज सेड दैट इट्स ऑल BS, इट्स आउट एंड आउट BS। सो वही बोलता हूँ कि इनके बातों पे भरोसा करना भाई, मतलब वही वाली बात है भाई, मेरी वाली अलग है। तो ये वही बोलेंगे भाई। ये बात उसकी कर रहा है ना अभी तो, जॉ फिलिक्स की। गॉड ऑफ भाई ही इज टॉकिंग अबाउट जॉ फिलिक्स। जॉ फिलिक्स इज ऑल्सो लिंक्ड। हमें जॉ फिलिक्स से भी लिंक कर दिया है भाई। दैट आवर officials are in Madrid to talk about Casemiro, and we also want to talk to Joao Felix। बिल्कुल वही किया है भाई। सी people at that point of time got so hyped that he's so different from Ed Woodward। he's talking to the fans, he's talking about how we have messed up। अरे भाई दुनिया को पता है how we messed up। उसने कौन सा ग्लेजर्स को कॉलर पकड़ के बाहर ले आया है वो। everyone knows that we have messed up। ये साले ग्लेजर क्या देखने आए थे एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है भाई। भाई यही चलता रहेगा। मैड्रिड में कौन है यूनाइटेड का? अभी तो कोई नहीं है भैया, अभी तो कोई नहीं है। स्पोर्ट भाई ले जाए, स्पोर्टिंग चले जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। प्ले फॉर स्पोर्टिंग, रिटायर विथ स्पोर्टिंग, आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ये तो भाई वेकेशन पे ही जाता है और ये करता क्या है, प्लेयर से लिंक करा दो, अपने आप की न्यूज बना के उसके बाद बस घूमते रहो। भाई हमारे इंटेंशन टू साइन, हमारे तो इंटेंशन भाई पता नहीं किस किस चीजों के हैं, बट हम करते कुछ नहीं है।
नहीं नहीं भाई गौरव भाई, दैट्स टोटली आउट ऑफ द विंडो। हम पागल अपना बनवा रहे हैं, बट भाई राबियो जैसे प्लेयर से पागल नहीं बनेंगे हम। दैट गाई वांट्स ऑलमोस्ट 10 मिलियन पर ईयर। हलवा है क्या? रियल मैड्रिड इज नॉट गोना गेट मोर देन 50 फ्रॉम यूनाइटेड। वो 30 साल का बंदा है, रियल मैड्रिड को पता है, रियल मैड्रिड इज सेंसिबल व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द बिजनेस डन। At this point of time, Perez can make it possible. Selling Casemiro to United, going all out. देखो भाई, बहुत बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट बहुत सारी चीजें नहीं भी हो सकती। सो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, बातें इनकी बातों पे भरोसा मत करो, बातों पे भरोसा मत करो। आयुष भाई, रोनाल्डो इज देयर, बेकहम इज देयर, चिचारितो इज देयर, और भी है, मतलब रूथ वैन निस्टेलरॉय इज देयर, आई गेस हाइंज एज वेल, सो आई गेस 5 बंदे हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये 5 तो मुझे याद है। इन टोटल आई गेस 6 और 9 है, आई इन टोटल आई गेस 6 और 9 है, कुछ पुराने वाले भी हैं। या माइकल ओवेन इज ऑल्सो देयर, इसको तो मैं भूल ही जाता हूँ, इस साल को यूनाइटेड प्लेयर बोलने का मन नहीं करता। या वरान इज देयर, वरान तो अभी है, चिचारिटो है भाई। इन टोटल 9 है, इन टोटल 9 है। मैं नाम बता देता हूँ, 7 तो मैंने गिनवा दिए, ठीक है। लॉरी कनिंगम, भाई ये बहुत पहले हुआ था, ये 1979 की बात है। तो लॉरी कनिंगम, डेविड बेकहम, माइकल ओवेन, रूथ वैन निस्टेलरॉय, गैब्रियल हिंस जो मैंने बोला 4, रोनाल्डो 5, डीमरिया भाई, डीमरिया, हर्नांडेज एंड वरान। ये 9 बंदे हैं, ये 9 बंदे हैं। या आई डिड काउंट द स्नेक भाई, 9 बंदे हैं, मैं तभी तो बोला 9 बंदे हैं। इन टोटल 9 है, जिनमें से एक बंदा है जो 1979-80 की टाइम का है, उसके बाद नहीं। भाई प्ले दिस गाय, इसको दो भाई, इसको यूरोपा खिलाओ, इसको काराबाओ खिलाओ, मेक हिम प्ले। Shane भाई says, भाई आई डोंट अंडरस्टैंड। ऑलराइट गाइस, मेक श्योर, चलो मैं ये कमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इट। आई डोंट अंडरस्टैंड द ग्लेजर्स। भाई छोड़ो ना, कॉमन सेंस नहीं है, विलिंगनेस और डिजायर तो नहीं ही है, कॉमन सेंस भी नहीं है, कॉमन सेंस भी नहीं है। बात इसी चीज की है। अब भाई लोग, मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, मेंबरशिप ऑन है, अभी तक 22 बंदों ने लिया भी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट इफ यू आर हियर, और अगर किसी को पर्क्स के बारे में भी पूछना है, एक बार जाके क्लिक करके देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो मेरे से भी पूछ लो। आई डोंट थिंक सो भाई। Wild prediction in football, anything can happen. So news of Casemiro is definitely heating up. That's what I said. News of Casemiro is definitely heating up. So let's see. In football, we cannot say no to anything. जब तक ट्रांसफर विंडो ऑन है, तब तक कुछ ओपन है, तब तक कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। So and guys, just one like away from reaching 50. So make sure like भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। मेंबरशिप का मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो भी ले सकता है ले लो, जो नहीं ले सकता कोई दिक्कत नहीं है। I will go with Frenkie. Honestly speaking, we need both of them, but I will go with someone like Frenkie. भाई हमारे विंगर्स के पास बॉल ही नहीं पहुंच रहा है यार। our three forward players, they are not even able to get the ball. तो भाई हम खेलेंगे क्या? what are we going to play with जब हमारे विंगर्स के पास ही बॉल नहीं है? तो भाई सॉमर से वी आर गेटिंग लिंक, आई डोंट नो वो नंबर 2 बनने आएगा या नहीं यहाँ पे। सो लेट्स सी। अनुज भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। गाइस वोट करो, लाइक करो, मेंबरशिप जो ले सकता है ले लो, ये 3 ही चीज बोलता हूं मैं, ठीक है।
अरे कोई दिक्कत नहीं अनुज भाई, क्लासेस आर मोर इम्पोर्टेंट, क्लासेस आर मोर इम्पोर्टेंट। भाई मैं तो बोल ही रहा था, मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि when it was Liverpool, it was, everything worked for them. Now Mane is gone. अब देखो उनकी हालत, it will take some time, it will take some time, but उनका वो एकदम tried and tested formula था। Hopefully that happens. I won't mind it, Shen भाई। कनम भाई, welcome to the stream, thanks a lot for joining in। भाई ये कब खत्म होगा भगवान जाने। कटावड़ा, we cannot do that, we cannot do that। सीजन शुरू हो चुका है, अब ये नहीं कर सकते हम। उसमें डालना पड़ता है कि भाई तुम जनवरी में कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि तुम वहां पे 2 गेम खेला और तुमने लोन कैंसिल कर दिया, ये नहीं कर सकते हम भाई। तो फिर वही है, हीटन के साथ खेलो और क्या। सी आई डू थिंक गौरव भाई दैट कैसेमीरो कैन हैपन, बट फॉर मी इट्स लाइक अ 1% चांस। मेरे लिए 1% चांस है। आई वुड नेवर से नो टू एनी डील, बट फॉर मी इट्स लाइक 1% चांस। कैसेमीरो होने का 1% चांस है। Sommer overall has been a really, really good keeper, Pranjal bhai. Overall he has been a great keeper. एग्जैक्टली भाई, हम फेथ पे ही जिंदा हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है। एज यूनाइटेड फैंस वी आर जस्ट लिविंग ऑन द फेथ। भाई काइसेडो के वही वाले थाउट्स हैं, 5 मिलियन में अवेलेबल था, हमने लिया नहीं। ही वॉज अवेलेबल ऑन 5 मिलियन में अवेलेबल था, और वी माइट जस्ट गो आउट एंड पे 50 मिलियन फॉर हिम नाउ। टिपिकल यूनाइटेड, जो हम करते हैं एवरी टाइम, दैट्स व्हाट वी डू। इट्स नॉट इवन वंस, so hero of zero, no भाई, he is not my friend। in my opinion Casemiro is a bulldozer type of player। भाई देखो, अभी हमें एक बंदा चाहिए जो कि बॉल जो है ना आगे दे सके, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दोनों ही चाहिए हमें, तो दोनों ही तरीके के प्लेयर्स चाहिए। बट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट वन गाय इन पर्टिकुलर, फ्रेंकी डियोंग, बिकॉज भाई हमारे देखो ना, तुम देखो हमारे विंगर्स कितने आइसोलेटेड है, हाउ आइसोलेटेड दे आर। उनको बेसिकली मिडफील्ड में आना पड़ता है टू गेट द बॉल, एंड द विंगर्स दैट वी हैव, इफ दे आर नॉट गेटिंग, if we are not getting the ball to run on the players, कुछ नहीं होगा उनसे। सीडीएम है भाई, काइसेडो इज अ सीडीएम, ब्राइटन वाला काइसेडो। भाई I never predict, but I really want to see the team, and then I want to even make my mind about prediction. At this point of time I definitely see it's a Liverpool win, even though they are missing those players, but our players are not hungry enough to play, that's the thing। उनको खेलना ही नहीं है। एक टीम के पास बंदे हैं जो इंजर्ड है, एक ऐसी टीम है जिनके बंदों को खेलना ही नहीं है। दे गिव अप इन द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ द गेम। वो पहले के 5 मिनट में ही बोल देते हैं कि भाई एक काम करो, देखो गोल वोल मार लो, ठीक है, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लाइन रख लो, बस। दे आर मोर देन हैप्पी विद दैट। कैसेमीरो भाई 300 तो नहीं दो उसको, कीप इट एट अराउंड 200 220 समथिंग लाइक दैट। 300 ज्यादा हो जाएगा। कैसेमीरो अलोन इज एनफ, नो। काइसेडो वाज 25 मिलियन पाउंड, नो ब्रेनर भाई। वो 5 मिलियन में भी नो ब्रेनर था उस टाइम पे। आई डिडंट वॉच हिम प्ले अ लॉट, दैट्स व्हाई आई सेड आई वोंट कमेंट, बट भाई हीरो जीरो, आई विल जस्ट से वन थिंग, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमसे बहुत सारी टीम्स बहुत आगे हैं, ठीक है, बहुत सारी टीम्स भाई। चेल्सी तो हटा दो, चेल्सी तो अलग लेवल पे है, चेल्सी लिवरपूल सिटी इनका लेवल अलग है। स्पर्स देख लो, यू लुक एट आर्सेनल, ये सारी टीमें हमें बजा के जाएंगी।
द वे वी आर प्लेइंग, ठीक है, जब तक वी आर नॉट इम्प्रूविंग मैसिवली, ये सारी टीम दे कैन लिटरली डिस्ट्रॉय अस, लिटरली डिस्ट्रॉय अस। मैं वही बोल रहा हूं, हमारे मिडफील्डर्स भाई आपस में बॉल देते हैं या तो पीछे बॉल दे देते हैं, और पीछे वाले बैक से खेल नहीं सकते। अनफॉर्चुनेट बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड। बार्सिलोना कैन टारगेट बुस्केट्स, रूबेन नेवेस, चलो देखते हैं। आई होप पीपल विल ब्लेम द बोर्ड टिल विंडो डजंट गेट ओवर। ऑब्वियसली भाई निपुण भाई, ऑब्वियसली भाई ब्लेम सब पे जाएगा, प्लेयर्स पे तो भाई सबसे ज्यादा डालो बोर्ड के बाद, यू नो बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा प्लेयर्स पे डालो। इफ मार्शियल, भाई देखो, इफ मार्शियल इज फुल्ली फिट, 100% फिट, विलिंग टू स्टार्ट, आई विल प्ले हिम इन फ्रंट, इन प्लेस ऑफ रोनाल्डो। भाई मैं लेफ्ट पे गर्नाचो डालूंगा। वेरी बोल्ड, पीपल माइट क्रिटिसाइज किया हाउ कैन यू ड्रॉप रोनाल्डो, बट या ही गोज टू बेंच। खिलाओ मार्शियल को, ठीक है, प्ले विथ अ फ्लूइड फ्रंट थ्री, और अगर नहीं, इफ इज नॉट फिट, बट या लेफ्ट विंग पे उसको लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्ले रोनाल्डो। बट भाई बात वही है ना कि इवन विथ रोनाल्डो वी टॉक अबाउट ही कैन हेड द बॉल, भाई उस पे क्रॉसेस पहुंचेंगी तब तो ही विल हेड द बॉल, उस पे क्रॉसेस पहुंचेंगी तब तो। भाई किसी ने नहीं सोचा था यार, आई हैव बीन फॉलोइंग दिस टीम सिंस 2007, किसी ने नहीं सोचा था कि इस लेवल पे इतना गंदा गिरेंगे हम, ठीक है, किसी ने नहीं सोचा था। इट्स नॉट अबाउट वन, it's not about one guy, me or you. I think no one thought that we will stoop to this level. मिलिंकोविच साविच के लिए तो भाई लाजियो के ओनर ने ही बोल दिया है, और मिलिंकोविच साविच के लिए भाई देखो 50 मिलियन से ज्यादा देना बनता नहीं। लिवरपूल से भाई आई आई थिंक लुई वैन हाल के टाइम पे जीते थे, नहीं उसके टाइम मोरिनियो के टाइम पे जीते हैं, सॉरी, जहां पे रैशफोर्ड ने 2 गोल मारे थे। भाई पीएसजी तो मजाक है, पीएसजी इज बेसिकली अ जोक। उस पे तो भाई उस पे कॉमेडी शो चालू करो पीएसजी पे, मेक अ कॉमेडी शो। मैं वही बोल रहा हूँ कि एक होता है व्हेन यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, एक होता है वेयर यू जस्ट डोंट गिव अ फक। तो यूनाइटेड वाले का यही सीन है, दे डोंट गिव अ फक। एग्जैक्टली भाई, ये बंदे बोल रहे हैं कि हमें न्यू साइनिंग्स चाहिए, इमेजिन दे आर टॉकिंग अबाउट हैविंग न्यू साइनिंग्स। भाई न्यू साइनिंग्स तो ठीक है, तुम तो खेल लो, तुम तो खेल लो, न्यू साइनिंग्स तो चलो ठीक है, आएगी नहीं आएगी बात की बात है, तुम तो खेल लो, बट नहीं, नहीं खेलना भाई। भाई मैं देखो, मैं अभी वेट करूंगा, आई विल लिटरली वेट फॉर रोमानो और ऑनस्टाइन। ये स्पेनिश जर्नलिस्ट का बहुत पुराना तरीका है ये, बड़ो भाई, इनका ये बहुत पुराना तरीका है, दैट्स व्हाट दे डू ऑल द टाइम। तो ये मैं तभी बोलता हूँ कि स्पेन वाले जर्नलिस्ट को आई डोंट रेट वेरी वेरी हाईली, ठीक है, उनको आने दो, उसके बाद भाई लीग की बात हो रही है, लीग में वी हैव नॉट डिफीटेड लिवरपूल इन क्वाइट अ फ्यू इयर्स नाउ। एफए कप में तो 3-2 जीते थे, वो तो याद है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मिहिर भाई देखो, they have made the signings, but they have Arteta as their manager, and they have appointed the right people. Now उनके पास एडू है, चलो ठीक है, they are not getting 80 or 90 million signings, but they are making the signings with the manager want. भाई वही वाली बात है, दिस टीम इज नॉट फाइटिंग, दिस टीम इज नॉट फाइटिंग।
Yeah, no one is fighting. Not Ronaldo. No one. Not a single player is fighting. Simple, bhai. Simple. For me, no money does this deal, to be honest. Unless until it's 70-75. Unless until it's 70-75, I don't think this deal is going to happen. So let's see. ये लखस्ट की बातें मत सुनो यार, ये कुछ भी लिखता है. He basically writes anything that he wants. मैं वही बोला ना, 3-4 साल हो गए भाई. तो उसकी औकात वही है, ठीक है. मिलिंकोविच साविच की औकात वही है. अब सामने से 70-80 मांग दे तो दे थोड़ी देंगे भाई. इसका एजेंडा सबके खिलाफ रहता है. इसका एजेंडा सबके खिलाफ रहता है. एग्जैक्टली भाई. देखो, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा. he will have to drop certain players and that's how he can make the team work. जो बेंच पे है बंदे, उनको मौका दो. ये क्राई बेबीज को हटाओ. give them a chance. if they are not performing, that's totally fine. if they are not performing, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. if they are not performing, उनको थोड़े रन ऑफ गेम्स दो. you cannot decide on the basis of 2 or 3 games. भाई कॉन्टेक्स्ट बहुत कुछ बोल सकते हैं गौरव भाई, कॉन्टेक्स्ट बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट अभी सिर्फ वी कैन डू द वेटिंग गेम. भाई देखो, टीम इंप्रूव करने में टोटली डिपेंड करता है कि हमारा ओनर कौन है. ग्लेजर्स के होते हुए टीम इंप्रूव भूल जाओ, एब्सोल्युटली भूल जाओ भाई. सबको हटाओ यार, सिर्फ मगवायर क्यों हटाओ, शॉ हटाओ, डेहिया हटाओ, एक बंदा क्यों हटाओ. हग तो सारे रहे हैं ना, हग तो सारे रहे हैं. एक बंदा मैं क्यों टारगेट करूं. सबको हटाओ. खिलाओ साला गर्नाचो को, खिलाओ रैशफोर्ड की जगह, मलासिया खिलाओ शॉ की जगह, मगवायर हटाओ, हीटन खिलाओ, सबको हटाओ भाई. 5-6 बंदे तो ऐसे ही मुंह पे हटने को तैयार हैं. 5-6 बंदे तो ऐसे मुंह पे हटा सकते हो तुम. भाई यही होता है उनके साथ. ये बातें बोलते हैं ना, बातें ऊंची ऊंची, और वही वाला सीन है ना, वही वाला सीन है. अच्छा, इसके लिए भाई नहीं, 50 मिलियन के ऊपर नहीं. ऑफर मोर, मच मच मोर तो भाई छोड़ दो, नहीं चाहिए कैसेमीरो. अब कैसेमीरो को 100 मिलियन में थोड़ी लोगे यार. कैसेमीरो 100 मिलियन में थोड़ी लोगे. माय ओपिनियन फॉर थिंक लिसांड्रो वुड इंप्रूव. कर दो, कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं भाई. मिडफील्ड याद कब हुआ जो भूलेंगे शिरन भाई. वही तो बात है ना, मिडफील्ड में याद करने लायक क्या है. मैं तो यही बोल रहा हूँ, मिडफील्ड में याद करने लायक क्या है जो भूलोगे भाई. तो वही वाली बात है ना कि तुमने जब 4 गोल खा ही लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से खाए, खा लिए ना. तुमने पहला गोल किया, टीम में कंपोजर कहाँ है. 10 मिनट तक गेम स्लो करो थोड़ा. एक ही गोल खाया है ना भाई, एंड दैट टू अर्ली. यू हैव सो मच टाइम टू गेट बैक इनटू द गेम. बट नहीं भाई, हमें तो हगना है. ऐसे कैसे हम 10-15 मिनट बिना ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई. लो, खा लिया एक और गोल भाई. मिडफील्ड की तो बात ही मत करो. मिडफील्ड तुम कम से कम 10 से 12 टीमें ऐसी हैं जिनका मिडफील्ड हमसे बेटर है, इजिली भाई. कोई वो भी नहीं है. तो वही वाली बात मैं बोलता हूं कि भाई मिडफील्ड तुम याद तब रखोगे जब उन्होंने कुछ किया हो. और क्या याद रखोगे अबाउट द मिडफील्ड. कुछ याद रख सकते हो. आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक यू कैन रिमेंबर एनीथिंग एल्स इन दिस मिडफील्ड. कुछ है ही नहीं भाई याद रखने को. कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है भाई. मैं वही बोल रहा हूँ कि स्क्वाड पेपर पे नहीं खेलना ना. गेम तो फुटबॉल फील्ड पे खेलना है.
अगर सिर्फ शक्ल देख के बिना गेम खेले अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो लेस्टर कभी चैंपियन बनती ही नहीं। तो चलो गाइस, विद दिस आई विल बी एंडिंग द स्ट्रीम आज के लिए। मिलते हैं कल, एंड होपफुली कल थोड़ा बहुत जल्दी कुछ न्यूज आए। अदरवाइज वही 9:25 और 9:30, 9:20 से 10 के बीच में होता है, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो। स्टे सेफ, हैव अ गुड नाइट, एंड जस्ट कीप प्रेइंग कि भाई हम कुछ करें ट्रांसफर मार्केट में, इवन ऑन द पिच। So guys, thanks a lot for joining in. Stay safe, have a great night, and see you guys tomorrow.